So let's start with the topic. The topic is why cash flow is important and how do I invest. Okay, like a lot of people, bro, when will it be started? I'm already live, guys. For everyone who's just thinking when it will started, I'm already live. I'm just scribbling up some wires which have been just crumbled around. Okay. Uh, by the way यार मैं सारा सेशंस अपना इंग्लिश में करता हूँ तो आई टुडे सेशन देयर समथिंग डिफरेंट ओके कैन एनीवन राइट दैट आज का पूरा सेशन हिंदी में होगा टुडेज होल सेशन विल बी इन हिंदी सो लेट मी राइट इट डाउन let me write it down the whole session is in Hindi the whole session is in Hindi आज का पूरा जो सेशन है वो हिंदी में रहेगा because I've seen that a majority of people request the whole session is in Hindi just so that you learn everything and I'm doing it. I don't know what happened. Hi everyone, just give me 1 second. How many what businesses you have, bro? I have more than 5 businesses as of now. The whole session is in Hindi so that you learn and it's my first session. So do give feedback. So do give feedback. Hi Arman, after a long time bro. So let's start with the session why cash flow is very important. In the last few months, I have seen that a lot of people, okay, a lot of people when go into the market or actually start a business, they are like, आज मैं ये करता हूँ, आज मैं वो करता हूँ, परसों कुछ और करता हूँ. That's how they do, right? So वो चीज को याद रखते हुए I thought कि लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि they don't understand कि basically कैश फ्लो क्या होता है. So हम लोग को कैसा है when we started out, हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको ज्यादा नॉलेज नहीं होता कि कैश फ्लो जैसी चीज क्या होती है. जिसको अभी भी नहीं पता है उसको मैं अभी बता दूंगा कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है. तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे के जो सोर्सेज हैं, जो भी आपके पास पैसे के सोर्सेज हैं वो बढ़े. और कैश फ्लो का एक और सिंपल सा अगर मैं मीनिंग बताना चाहूँ तो कैश फ्लो मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज बनाते हो पैसे बनाने के, और आपके बिजनेस में पैसा आएगा और जाएगा. वो स्टैगरेंट नहीं रहेगा. ओके, जो भी पैसा है आपके बिजनेस में, आपके किसी भी चीज. आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट ब्रदर, आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट. थैंक यू. मुझे हिंदी भी समझता है. ठीक है यार, बहुत दिन बाद आई एम डूइंग माई फर्स्ट सेशंस लाइक यार अभी भी इंग्लिश की आ रही. तो मैंने लास्ट टाइम कभी हिंदी में किया था, वो किया था 3 साल पहले. मैंने एक वेबिनार किया था हिंदी में, पूरी हिंदी में वेबिनार थी. सो आज पहली बार मैं हिंदी में वापस से ट्राई कर रहा हूँ. तो जो भी गलतियाँ होगी, जैसे भी फीडबैक्स होंगे, आप फीडबैक्स अपने दे देना, क्योंकि मेरे को हिंदी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है. एक रीज़न ये है कि मैं तो वैसे भी यहाँ का ही हूँ, इंडियन ही हूँ, बट एक सबसे बड़ी इशू ये है कि मैंने कभी किया नहीं है. लाइक कैमरा के सामने मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. तो स्टार्ट करते हैं. तो सीन ये है कि कैश फ्लो क्या होता है. तो कैश फ्लो होता है आपके बिजनेस में पैसा आना चाहिए और आपके पैसे से बिजनेस जाना चाहिए, बिजनेस में से पैसा जाना चाहिए. वही होता है सिंपल सा मीनिंग में कैश फ्लो, आना और जाना, पैसा आना और जाना. उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाते रहना पड़ता है. मतलब आज ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पैसा बनाए हो और आप रुक जा रहे हो. आप एक नए सोर्सेस बना रहे हो बिजनेस में, नए सोर्सेस बना रहे हो जहाँ से पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं. जितने लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट हैं वो लोग शायद देख रहे होंगे. मैं आज एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर प्रमोट कर रहा हूँ. जो ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. बट मैं कुछ ना कुछ हमेशा प्रमोट करते रहता हूँ. या तो कोई नया सॉफ्टवेयर हो गया, या तो कोई नया प्रोडक्ट हो गया, या तो कोई नई ट्रेनिंग हो गई. मैं कुछ ना कुछ हमेशा सेल कर रहा हूँ. तो विद सिंपली उसका जो सिंपल सा मतलब होता है वो होता है कैश फ्लो. अपने बिजनेस में कैश फ्लो जनरेट करो. और अगर आपने कैश फ्लो नहीं समझा कि कैश फ्लो की कितनी रिक्वायरमेंट होती है आपके बिजनेस में, तो शायद आप ऐसे बिजनेस को सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे.
बिकॉज आपको हमेशा नए नए बिजनेस के बेस बनाने होंगे. सेकेंडली, जब आप नए नए बेस बना रहे हो, उसके साथ ही आपके जो पहले के बिजनेस के जैसा भी आपने बिजनेस बना के रखा है उसको आपको ग्रो करना होगा. तो वही होता है सिंपल से मतलब में कैश फ्लो. अब देखो, हर एक बिजनेस में मल्टीपल टाइप के कैश के ऑप्शंस होते हैं. कहीं पे आप देखोगे कैश आपको आता है बाय आपको कहीं पे कैश आता है बाय इन्वेस्टमेंट. ओके, सो कहीं पे आपको कैश आता है बाय इन्वेस्टमेंट, कहीं पे आपको कैश आएगा बाय योर सेल्स. ओके, सो ऐसे करके अलग अलग पोजीशन से अलग अलग वेज से लोगों के पास कैश फ्लो आता है. डिपेंडिंग अपॉन ऑडियो इज नॉट देयर, ऑडियो इज नॉट देयर. तो यार ऑडियो आई डोंट नो. Others can hear me on Instagram. Can others hear me on Instagram? So the point here, the point that I'm actually trying to say is, you have to make more channels. Okay, you have to make more channels of cash flow for your business. No matter how you do it, no matter like the way you did. Okay, which businesses you have? यार past में बहुत सारी training की है. You could watch those trainings. Facebook पे सारी trainings पढ़ी हैं, and it is there on my YouTube channel. You could watch those training. So you do it like this, okay? You do it like this. Now, what people don't focus upon, okay? What people don't focus upon, they either make cash flow, they make places from where they could generate cash, but they don't actually monetize those cash channels. मतलब कि आपको पता है कि आप अपने Facebook friend list से ही पैसे कमा सकते हो, but you are not able to monetize those things. If you're not able to do that, basically you are wasting out the already available assets into your business. So people these days see that it is quite good. It is quite good. It seems fancy about raising investment, talking about this investment related stuff. But what really is a hard part, what really is the hard part again, is what's your next goal? Not decided yet. So people don't have any idea about how much the sources of income they have. They could monetize it and they could make money from it back and forth. So in order to do that, in order to monetize those channels, in order to grow those channels, in order to increase the availability, increase the number of people making money from those, or you making money from those whole channel, is really important. The big thing, again, people throw a lot of money out from their own pocket on fancy stuff. How many of you have made money in the past but have thrown money on it, without even thinking twice about it, It happens. It happens with everyone. Initially, when you start making money, I'm not saying about online, if you start making money at whatever place you have, okay, from wherever you have, like doing your job or something like this, the first thing that we do as a human is we first try to satisfy without having without making those right investment, you won't be able to grow. चलो initially सब लोग करते हैं, they buy fancy stuff, they buy things that are not necessary at that point, but they buy it, they buy it. So what I want to say is, once you have a cash flow started, think about investment and think about multiplying the money. I do it a lot. If you have followed me like rigorously or have followed me in the past, every 2 months, okay, in every 2 or 3 months, I take a new challenge or I take a new business, okay. Just 3 months back, I started a restaurant. Now I'm starting a e-com brand. Maybe 2 months down the lane, I'll be on something new. What does that simply mean? Being on a new business, and where do you invest? That's what I'm talking about. So what I do is, I never waste my money. I never waste my money. I focus on investing it back as much as possible, because the more you invest, the more you multiply the money. That's the golden rule of money. That's the golden rule of having a cash flow. The more you make, the more you invest, the more you multiply the money. Because money is nothing. Like it, आज वो आपके बैंक अकाउंट में है और कल वो किसी और के बैंक अकाउंट में होगी. But if you invest and if you throw it in the right bank account, it would make money for you every single month. It's like a retainer model. Every month that money is paying you back and forth. So
taking these things into consideration, I've started learning the rules of cash flow quite a month long. Not such early. I've learned these things very late, but now I'm proud that the way I'm investing my money, the way I'm reinvesting forward is, even I did a webinar on, I don't remember the date, I think so I did a webinar on last Sunday. In that webinar, I showed people my actual my bank account details. So in my bank, I just had around 6,000 rupees INR. I did it on last Sunday, if I'm not wrong. So I showed people my actual my savings bank detail. There was just 6,000 rupees into that bank account. The reason is I want to be that, मुझे वो एक मुझे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पे मैं जितना भी पैसा कमा रहा हूँ उसको मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रैदर वो मेरे बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा है। तो ये चीज़ आप सबको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ करना इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप पैसे को री इन्वेस्ट करते हो और एक सही जगह इन्वेस्ट करते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करना है, सेविंग्स अकाउंट रिटर्न नहीं देते। रिमेंबर दिस थिंग, जब आप अपने पैसे को अपने बैंक में रखते हो तो आप खुद नहीं ग्रो होते। अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखते हो तो आप खुद नहीं ग्रो होते, आप किसी और को ग्रो करते हो। ठीक है, आप किसी और को ग्रो करते हो, तो रैदर आप वो किसी और को ग्रो करने के बजाय अपना पैसा अपने बैंक में न रख के अपना पैसा री इन्वेस्ट करें मार्केट में। जी मैं और यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ मेरी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा री इन्वेस्ट किया है। तो अगेन तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा लोगों के माइंड में कि देवव्रत की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आप करते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे मुझे लगता है कि अगर शायद ई कॉम अच्छा पड़ा लग रहा होगा, अच्छा दे रहा है, या इंटरनेट पे कोई ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोग्राम है अच्छा रिजल्ट दे रहा है, कोई एफिलिएट प्रोग्राम है जो अच्छा रिजल्ट दे रहा है, मैं वहां पे पैसे री इन्वेस्ट करता हूँ। दूसरा, मैं कोर्सेज में री इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ या किसी और को सिखा रहा हूँ तो पहले मुझे तो उतना पता होना चाहिए, पहले मुझे तो उतना नॉलेज होना चाहिए कि मैं आपको सिखाऊं। तो वो सब करने के लिए वो सब करने के लिए मेरे पास एक नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज में जो भी नॉलेज होती है वो मैं कोर्सेज से लाता हूँ। तो मैंने फर्स्ट चैनल बता दिया, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होती है कि मैं किसी न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करूँ। सेकेंड मेरी प्रायोरिटी होती है कि न्यू बिजनेस के साथ साथ मैं कोर्सेज में इन्वेस्ट करूँ सो दैट मुझे वहां से लर्न करें। अब आपको ये लग रहा हो कि देवव्रत आप कैश फ्लो की बात कर रहे हो और फिर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो, तो अगर मैं किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो आज नहीं मैं उससे पैसे बनाऊंगा, बट 2 months डाउन द लेन, 5 months डाउन द लेन, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 साल बाद मैं उस बिजनेस से पैसे बनाऊंगा ना। तो जब मैं उस बिजनेस से पैसे बनाऊंगा आफ्टर 3 months या 5 months या 1 साल भी आप ले लो, तो दैट इज वो मेरे लिए एक वापस से कैश फ्लो हो जाएगा, क्योंकि मैंने आज इन्वेस्टमेंट की और मुझे उसका रिटर्न आ रहा है 3 से 4 महीने बाद। तो आपको भी अपने बिजनेसेस में यही करना है, आपको वो कैश स्ट्रेटेजी बनानी है, आपको वो प्रोसेसेस बनाने हैं अपने बिजनेस के लिए जहाँ पे आप री इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करो। मैं बता रहा हूँ, मैंने अभी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के बारे में बताया, मैंने अपने 2 पोर्टफोलियो बता दिए। एक मैंने बताया कि मैं न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ, सेकेंडली मैंने बताया कि कोर्सेज में इन्वेस्ट करता हूँ, थर्ड मेरी जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल चॉइस